हेलो सर, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। शुरू करें? जी हाँ जी, जी, करें करें बिस्मिल्लाह करें। करें। अच्छा, ठीक है सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ूदन अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा। ये सूरत आल इमरान की आयत 191 थी। मफ़हूम तर्जुमा है, जो उठते बैठते और लेटे हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हैं और उन्हें देखकर बोल उठते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, आपने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आज हमारे जज़ाकल्लाह दरमियान जज़ाकल्लाह। आज हमारे दरमियान दो एक अहम शख्सियत मौजूद हैं और पाकिस्तान के नामवर इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के नामवर इदारों का सर्विसेज किए, AFIP कमांडर रहे और दोनों शोबा माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ एक बेहतरीन लीडर भी हैं। तो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं डॉक्टर कामरान साहब को, ब्रिगेडियर कामरान साहब को, अब ये भी एक्स कमांडेंट हो गए और एक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पैथोलॉजी की, पेरियार यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसी तरह जनरल साहब भी माशाल्लाह एक्स कमांडेंट हैं और एक एक दूसरे इदारे के अंदर एक सरबराह हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर कामरान साहब, आजकल का इशू ये है कि हर जिस तरीके से हम एपिडेमिक्स या एंडेमिक्स की बात कर रहे होते हैं, इसी तरह हम उन चीज़ों को नहीं देखते जिनकी वजह से हम किसी चीज़ को कंट्रोल करके हम इनको ठीक कर सकते थे। AMR एक बहुत बड़ा एक इशू है और आज से मेरा ख्याल है कि 3-4 साल पहले जब जनरल साहब यहाँ पे ब्रिगेडियर होते थे CMH के अंदर, तो एक पाकिस्तान एसोसिएशन पैथोलॉजिस्ट की एक मीटिंग हुई, तो इन्होंने ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर एक हमें एक लाइव टॉपिक दिया था। फिर एक गैप रहा हमारा और राब्ता ना ही रहा। तो मैं आज के इस वेबिनार को हम न सिर्फ अपलोड करेंगे बल्कि इसको पब्लिश करेंगे हम पल्स के अंदर। तो इसके जो मिनट्स होंगे और अगले वाले आने वाले हमारे स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। ओवर टू यू प्रोफेसर कामरान साहब। Sir, thank you very much, Professor Mulazim Bukhari, for providing me this opportunity to speak on a very important topic, that is antimicrobial resistance. And today we are going to explore some of the therapies which are available and which can be used for uh, for combating the AMR. Let me share the presentation, sir. Am I audible and is my presentation visible, sir? जी, ऑडिबल Yes, एंड it is, sir. विजिबल। Right, sir. So, uh, for those of me who don't, for those of you who don't know me, I'm a retired brigadier and settled as head of department of pathology at Fuji Foundation Hospital, Rawalpindi, and I got recently retired from Army as a commandant of AFIP, and I'm professor of pathology
in the subject of microbiology. So sir, thank you very much for giving me this opportunity once again. And I also thank the chairman of this session, Major General Irfan Ali Mirza, for sparing his precious time. So the topic of today's presentation is Beyond Antibiotics, exploring the novel therapies to combat AMR. This shall be the sequence. First, I'll highlight the roadway of antibiotics, and then I'll give you a bit of detailed account on AMR, the silent pandemic. And we'll discuss the factors why the antibiotics are failing and what is the situation regarding AMR in Pakistan. Then the second portion of this talk shall be on novel therapeutic antimicrobial agents, which is really important. This shall lead to the very important topic of bacteriophage therapy, which is actually available. And finally, I'll conclude and give you a future outlook about bacteriophage therapy and various other novel therapeutic agents. So first is the roadway of antibiotics. As you are very well aware, that the penicillins they came into existence in about 1928, but soon after their use in about 1940, we started having resistance against it. And there were many derivatives of penicillin which came into existence thereafter. And so many other groups of antibiotics were launched. And this was a very good era for treating and combating infections. But as the antibiotics kept on evolving, the resistance also kept on creeping up. Then we had in 1980s, 1990s, and 2000, we had a glorious era of cephalosporins. And this was followed by fluoroquinolones as well. And the latest of the antibiotics which we saw uh, were the oxazolidinones, daptomycin, and tigecycline. But the problem of antimicrobial resistance is huge. It is enormous right now, which I shall be discussing right now. This is a stark warning from the ex-director, Director General of WHO, Dr. Margaret Chan. A post-antibiotic era means, in effect, an end to the modern medicine as we know it. Things as common as strep throat or a child's scratched knee could once again kill. So this is very alarming statement. The antimicrobial resistance stands as one of the most critical global health threats of our time, often referred to as the silent pandemic. The figure of deaths in 2019 due to AMR were 1.27 million. The projected figure is 2.25 million in the year 2030. And the projected figure, according to WHO, is going to be 10 million in the year 2050. That is why they call it an impending catastrophe. The global economic impact, according to the World Bank, is a loss of 3.5 trillion by the year 2030, and it is going to be an addition of another $1 to $2 trillion by the year 2050. So this figure is projected to be $5.5 trillion loss due to AMR. The escalating crisis imposes a substantial economic burden while claiming millions of lives. This map shows that in the year 2050, Asia is going to present the most number of deaths, which is going to be 4.7 million.
and this is more than deaths in the Africa, which the figure projected is 4.1 million. So why the traditional antibiotics are failing? The simple mechanisms which are known to us are that the bacteria can rapidly adapt to environmental changes, including antibiotic exposure, through genetic mutations and selection. The selection pressure is very important due to misuse of antibiotics. The antibiotic use creates selective pressure that favors resistant strains, leading to their proliferation. And the challenge is that the development of new antibiotics has stalled due to economic, regulatory, and the scientific challenges which are there. A simple problem is that the pace of bacterial evolution consistently outstrips the pace of antibiotic development. So the bacteria are faster than the humans, as I call it. So the need for innovation is that there is an urgent need for innovative beyond antibiotic therapies to combat AMR and safeguard the global public health. This is a recap of the bacterial resistance mechanisms. As we know, these are the main resistance mechanisms like enzymatic degradation. Bacteria produce certain enzymes that chemically break down the antibiotics, rendering them inactive, such as beta-lactamases. These hydrolyze the beta-lactam rings in penicillins and cephalosporins, and certain other enzymes like aminoglycoside modifying enzymes can inactivate aminoglycosides, and chloramphenicol acetyl transferase can inactivate chloramphenicol, rendering these antibiotics ineffective. Then there is a problem of reduced permeability in the gram-negative bacteria. Changes in channel proteins, porins, limit the antibiotic entry. For example, absence of OPAL D2 channel protein leads to imipenem resistance. And a very common problem is that of target site modification, as seen in Staphylococcus aureus, which modifies the penicillin binding protein to penicillin binding protein PBP2A. PBP2A has a low affinity for beta-lactam antibiotics, reducing the drug binding. Then there are certain microorganisms which produce glycocalyx matrix around them, leading to formation of biofilm. This is seen mostly on the implanted devices. These are structured communities of bacteria encased in a self-produced protective matrix. This matrix acts as a physical barrier limiting antibiotic penetration. And biofilms increase resistance by 10 to 1000 times as compared to the free-floating planktonic bacteria. These are the two main mechanisms of genetic accelerants of resistance: horizontal gene transfer and mobile genetic elements. Among the horizontal gene transfer, the well-known mechanisms include transformation, transduction, and conjugation. And in the mobile genetic elements, we know that there are plasmids, which are small circular DNA molecules, transposons, which are DNA segments that can move from one location to another, and integrons, which are genetic elements that capture and express the gene cassettes, including the antimicrobial resistance genes. This genetic exchange can rapidly undermine the effectiveness of critical antimicrobial therapies. For example, how a horizontal gene transfer takes place. This is an Enterococcus faecalis, which is carrying vancomycin resistance gene, and this gene is transferred to horizontally to Staphylococcus aureus, which was previously MRSA, and this converts to vancomycin-resistant Staphylococcus aureus. This case demonstrates how genetic exchange can rapidly undermine the effectiveness of critical antimicrobial therapies. Now, what are the implications? Horizontal gene transfer can rapidly spread resistance, and it threatens our most powerful antibiotic options, rendering them ineffective.
highlights the need for alternative therapies. So what do we have to do? We have to increase global awareness of antibiotic resistance. We have to practice it, actually. We have to encourage best practices among the general public, healthcare workers, and policymakers to avoid further emergence and spread of antibiotic resistance. So what is the situation of AMR in Pakistan? You will be surprised to know that Pakistan is the third largest consumer of antibiotics. We have an increased incidence of hospital-acquired infections. The projected figure is about 30,000 deaths annually due to AMR, and this is certainly an underreported figure. Then there are indirect expenses, and Pakistan ranks among the highest globally for resistance to carbapenems, cephalosporins, and fluoroquinolones. And these are the high-end antibiotics. So we have developed a huge resistance against the bacteria, have developed huge resistance against these high-end antibiotics. What are the key impediments in Pakistan? More than 51% of population is used to self-medication. GPs prescribe high-end antibiotics, which include cephalosporins, third generation type of cephalosporins, carbapenems, and fluoroquinolones. And there is availability of over-the-counter medications. There is a big question mark on the quality of medicines and presence of more than hundreds and thousands of quacks which are prescribing high-end antibiotics. GLASS stands for Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System. And the global perspective is that global commitments include UN AMR Declaration 2024 and 2030. Global Sepsis Agenda, prioritizing early diagnosis, stewardship, and surveillance. So they have prioritized the early diagnosis, stewardship, and surveillance mechanisms. The WHO GLASS initiative recommends integrating molecular diagnostics for real-time AMR tracking and surveillance. So the next answer is another important factor, that molecular diagnostics have to be included in our diagnostic panels for early diagnosis. So what is the Pakistan perspective? Pakistan participates in GLASS through our own system, which is PASS, Pakistan Antimicrobial Resistance Surveillance System. And they collect the data and report AMR data from major hospitals, which are declared as sentinel hospitals and labs, and they project this data to WHO GLASS. The focus areas include bloodstream infections, ICU pathogens, high priority AMR organisms, such as MRSA, ESBL, and CRE microorganisms. The opportunities include integration of rapid molecular diagnostics to guide targeted therapy and inform stewardship. So the main benefit of including rapid molecular diagnostics shall be providing guided targeted therapy as early as possible. But the challenges include limited lab infrastructure, underreporting, and delayed adoption of molecular diagnostics. So what do we have to do? We have to preserve our antibiotics, use antibiotics only when needed, avoid self-medication, educate healthcare workers, complete the full prescribed course. These instructions have to be given to the patients. Use narrow-spectrum antibiotics where appropriate. Practice antimicrobial stewardship in the hospitals as well as the labs. Monitor and report resistance patterns regularly, and increase public awareness and behavioral change campaigns, improved hygiene and sanitation, strict infection prevention and control, vaccination to prevent infections, use of probiotics, prebiotics, and microbiome restoration, immunotherapy or monoclonal antibodies, rapid diagnostics for precision treatment, and novel therapeutic agents.
This is an antibiogram example shared from AFIP, which shows the emergence of resistance against the last resort antibiotics like colistin. Our time with antibiotics is running out, so we have to change. What are novel therapeutic agents? This is the second part of this talk. So novel therapeutic agents are the innovative, non-traditional approaches which can be employed, which are under research mostly, and which can be employed practically as well as alternative to the antibiotics. These include CRISPR-Cas-based antimicrobials, antimicrobial peptides, antivirulence drugs, immunomodulators, monoclonal antibodies, biofilm disruption agents, quorum sensing inhibitors, probiotics, prebiotics, and FMT, natural products and phytochemicals, efflux pump inhibitors, antibiotic potentiators, and bacteriophage therapy. So, what are the approaches which can be employed? We have to first identify the unconventional targets in the pathogen. So, in this way, we can use antimicrobial peptides and efflux pump inhibitors. The alternative therapies include phage therapy, antibodies, and immunomodulatory agents, which can be used as therapeutic agents. I shall be talking about these various approaches in the upcoming slides. Then ultra-narrow spectrum antimicrobials include CRISPR-Cas based antimicrobials. Then we can revamp the already in use antibiotics by adding adjuvant with them, and then mining the uncharted microbial territory. So first is CRISPR-Cas based antimicrobials. CRISPR, as you know, it is a gene editing technology, and it stands for clustered regularly interspaced short palindromic repeats. This gene editing technology can be programmed to specifically target and disable antibiotic resistance genes within the bacteria or even kill the bacteria entirely. So the main application for us for this CRISPR-Cas system shall be the reversal of antibiotic resistance. Lately, the delivery systems often involve modified phages they are being developed to get the CRISPR machinery into the target cells. Next is antimicrobial peptides and antivirulence drugs. Antimicrobial peptides are naturally occurring molecules that can directly kill pathogens, and these are the various mechanisms by which they can act. Antivirulence drugs target the mechanism pathogens use to cause disease without necessarily killing them. So antivirulence drugs will reduce the virulence and the potency of the bacteria. Antimicrobial peptides can also act as antivirulence agents, particularly at low concentrations, by disrupting bacterial communication and other virulence factors like biofilm formation. They have dual mechanism of action. The first is that a small oligopeptides have amphipathic nature. They bind to negatively charged bacterial components like this, and there is pore formation and leading to death of the bacteria. The second mechanism is immune modulation. Some antimicrobial peptides like LL37 neutralize the LPS, inhibit biofilm formation, and attract immune cells. But the clinical examples include miripavidin and LL37. These are the antimicrobial peptides with promising antivirulence properties as well. But the key challenges have been toxicity, which has been systemic, and development of resistance. The MCR1 gene can modify lipid A, inhibiting colistin binding and leading to resistance. What are immunomodulators? So first we have to know what is immunomodulation.
It is regulating the body's immune response to either boost it against the pathogen or dampen it to prevent the excessive inflammation and damage. The strategies which are employed are shown here, and briefly, they are using the host defense peptides to fight bacteria and modulate the immune cells, developing immunomodulatory biomaterials, employing plant-based compounds such as phytochemicals, using cytokines to fine-tune the immune system's actions. These are promising alternative or supplement to traditional antibiotics, especially against the drug-resistant bacteria. The mechanism of action which is employed by immunomodulator therapies are that the monoclonal antibodies are used. They offer a targeted approach to combat the bacterial infections by neutralizing specific bacterial components. For example, Pseudomonas is a common pathogen causing hospital-acquired infection. The monoclonal antibodies target the type 3 secretory system and the needle tip protein PCRV, blocking the toxin injection. The clinical trials have been conducted successfully, and with the good outcomes, good tolerability, and good pharmacokinetics, but achieving sufficient efficacy to proceed to later phases has been a challenge up till now. What are monoclonal antibodies? These are used in as I've said in the previous slide, that they are used for immune modulation. They are lab-based proteins that mimic immune system's ability to fight off the diseases by binding to specific targets, such as antigens, various antigens, and cancer cells. Even they are being used in cancer. They are used to treat a wide range of conditions, including cancers, infectious diseases, autoimmune diseases, and they can be designed to target specific bacterial components, like toxins or proteins, which are involved in biofilm formation. Now we come to the natural products and phytochemicals. These are the compounds derived from plants. Phytochemicals are actually these plant-based antibiotics. We can call them antibiotics, but actually they are not. But they are known as phytochemicals. They can be derived from microbes and marine organisms, and they have shown promising antimicrobial properties and can enhance the efficacy of existing antibiotics. The main examples are curcumin, which are derived from turmeric, and allicin derived from garlic. And they are under research and they have shown very promising results. Then we come to biofilm disruption agents. Many chronic infections involve biofilm production, and these are protective layers that shield bacteria from antibiotics and the hostile environment. The mechanisms which are employed are surface modification, then modulating the cell adhesion genes, inhibiting matrix formation, preventing the suppression of expression of efflux pump, and inhibition of quorum sensing, which I shall be talking in the next slide. The agents being developed to break down these biofilms, they are under study and they have also shown promising results. They include dispersin B and certain D amino acids. Now we come to quorum sensing inhibitors. What is quorum sensing? Quorum sensing is a cell-to-cell communication system bacteria use to coordinate gene expression based on their population density. Quorum sensing inhibitors, or QSIs, they disrupt this communication, as shown here, reducing the bacterial pathogenicity and making them more susceptible to the host defenses. The clinical example is that in Pseudomonas aeruginosa infections in the lung, the azithromycin at sub-inhibitory concentration decreases the quorum sensing.
So in patients with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infections, this treatment has been associated with improved health outcomes and fewer exacerbations. So the QSIs make bacteria less harmful rather than killing them directly, reducing selective pressure for resistance development. Various strategies which quorum sensing inhibitors use, there are so many strategies, but important ones are inhibiting the synthesis of signal molecules, breaking down signal molecules, competing with signal molecules, blocking the binding of signal molecules, scavenging autoinducers by antibodies and macromolecules, drug delivery using nanoparticles, which is also facilitated by QSIs. Prokaryotes produce a variety of QSI enzymes that can break down the QS signal molecules as shown here, or AHLs in particular. These enzymes include acylases, lactonases, and oxidoreductases. What are probiotics, prebiotics, and fecal microbiota transplantation or FMT? These methods focus on modulating the gut microbiome to prevent and treat infections, and these are the different ways to manipulate the gut microbiota. Probiotics are the live microorganisms or their components, which are similar to the beneficial bacteria which are present in the gut, and they are present in the healthy gut. Prebiotics are non-digestible plant fibers that can act as food source for the beneficial gut bacteria, while FMT involves transferring fecal matter from a healthy donor to a patient to restore a balanced microbial community and fight off the resistance pathogens. So this is also under research and it has also shown very promising results. Now we come to efflux pump inhibitors or EPIs. Many bacteria develop resistance by using the efflux pumps to expel antibiotics from the cell. As I've talked about it in the previous slide, that this is a very important mechanism by which the bacteria gain resistance against certain antibiotics. The EPIs are compounds that block these pumps, restoring the effectiveness of the antibiotics. The naturally occurring EPI agents include verapamils. These are certain drugs which are available. Verapamil, quinidine or quinine, cyclosporin, ritonavir, biricodar, and timgodar. Currently, none of them has been approved for human use due to their systemic toxicity. So what are antibiotic potentiators? These are actually the enzymes which are beta-lactamase inhibitor. This is the list of those enzymes: tazobactam, sulbactam, avibactam. Beta-lactamase is the enzyme, and these are the agents which neutralize the beta-lactamase enzymes. And avibactam, clavulanic acid, and vaborbactam. These protect meropenem from degradation, restoring activity against the carbapenem-resistant enterobacterials as well. Then the other antibiotic potentiators are MD124. These are membrane permeabilizing agents, selectively permeabilize the bacterial outer membrane. These allow antibiotics like colistin to penetrate the resistant gram-negative bacteria. So this has to be given along with colistin to improve its penetration and efficacy. These are cost-effective strategies to extend the lifespan of the currently available antibiotic arsenal. Now we come to bacteriophage therapy. What are bacteriophages? Bacteriophages are the viruses which infect specific bacteria and then lyse or kill them. A highly specific and innovative living antibiotic approach that leverages naturally occurring viruses. These viruses are naturally occurring to target and lyse bacteria without broadly disrupting the host microbiome. So this is a safe
type of feature. Bacteriophages can undergo two types of cycles in their lifespan. One is lysogenic, in which the viral DNA is inserted into the bacterial cell, and here in the lytic cycle, the viral DNA is again inserted, but the lytic phages attached to bacteria inject genetic material, hijack the cellular machinery, and cause the host cell to burst, releasing new phage particles, like as shown here. These are highly specific to target pathogenic bacteria while sparing the beneficial microbiota of, say, gut. These can co-evolve with bacteria to overcome resistance mechanisms. These are self-replicating, they multiply at the infection site, potentially reducing the required dosage as well. And these have lower toxicity. They are less toxic to host cells compared to the conventional antibiotics. There are two main phage therapy models which are available for application practically, and they are being used world over. One is personalized on-demand phage cocktails, and the other is fixed composition broad-spectrum phage products. In this category, the screening of patients' bacterial isolate against pre-characterized phage banks is employed, and the regulatory framework allowing production without case-by-case approval. So this regulatory framework does not need case-by-case approval, and this is being used in Belgium. It is known as Belgium's magistral phage system, and it facilitates rapid deployment of personalized phage medicine for individual patients. The second category is fixed composition broad-spectrum phage products. Here, standardized phage cocktails are used. They are designed for specific pathogens, but clearer regulatory pathway compared to personalized approaches is available in this category. And these are being used in Russia and Georgia. They offer over-the-counter phage cocktails for treatment of MDR infections. Both these models aim to provide targeted excuse me, bacterial elimination without broadly disrupting the host microbiome, which is a key advantage over traditional antibiotics. Currently, the phage therapy is not FDA approved, but there are regulatory systems available, as discussed in the previous slide, that Belgium is using, Russia and Georgia are offering over-the-counter phage products, and clear regulatory pathways for fixed composition products are required to be achieved. The regulatory frameworks evolving to facilitate personalized phage medicine. But there is growing body of evidence, as seen in the compassion case studies being conducted all over the world. Clinical trials are ongoing, and completed trials demonstrate safety and efficacy profiles. Implementation in hospital settings for treating MDR infections is the real world application actually. The focus areas are mainly MDR gram-negative infections, and targeting specific pathogens with phage cocktails, reducing antibiotic use and resistance uh, development. They can be used in place of antibiotics when they are tested in the phage lab, then they are offered against a specific or particular microorganism, and then they can be used in conjunction with the existing antibiotics. Enhancing host defenses through target pathogens reduction. Efficacy shown in cases where traditional antibiotics have failed. So this therapy is ongoing in different parts of the world. This is the AFIP bacteriophage research lab, which was inaugurated by Surgeon General of Pakistan Army in May 2025. And the sole purpose of this lab, establishment of this lab, was to provide compassionate therapy, bacteriophage therapy for the MDR patients.
or those patients who had no choice of antibiotics. The future outlook is that despite challenges, the outlook for phage therapy is promising. Locus et al. Are Locus et al. Are developing phage therapeutics that use CRISPR-Cas technology, and in this scenario, the phages deliver CRISPR-Cas3 to their bacterial host, which irreparably shreds the bacterial DNA. There are certain novel molecular approaches available. The outer membrane disruptors represent a promising strategy against MDR gram-negative bacteria by targeting essential transport systems and proteins. One of the examples is darobactin, which targets BAM-A protein, and it leads to impaired protein folding and integration. The other example is lolamycin, which targets LOL-CDE complex. This leads to weakening of the bacterial envelope integrity. This is active against MDR gram-negative pathogens. Then we have certain AI-driven drug discovery revolution, and with deep learning discovery, the AI uses neural networks which has screened more than 100 million compounds and has come up with a compound called helicin, which is active against gram-negative pathogen, Mycobacterium tuberculosis, and Enterobacteriaceae. So this compound is undergoing clinical trials right now. Antimicrobial peptide network predicts peptide activity, enabling rapid identification of the candidates. Then synergistic combinations can also be predicted by AI. This is how it goes. First, there is data analysis, then target identification, leading to optimization, refining the candidates, and then finally to clinical translation. AI reduces the drug discovery time from years to months. So what is the future outlook and its implementation? We have to translate the research to the bedside in favor of the patients. Prioritize bench to bedside pathways to accelerate clinical translation of promising AMR therapies. Then develop adaptive regulatory pathways for novel therapies while maintaining the safety standards. Create sustainable funding models and value-based pricing that support continued innovation. How to fight the AMR by using comprehensive AMR management? It uses multi-pronged approach. So what is multi-pronged approach? Here we use integrated novel therapies with enhanced surveillance and responsible antimicrobial stewardship in the hospitals as well as in the labs. And this has to be collaborated with One Health approach. The key challenges include economic hurdles, which limit clinical translation, and regulatory barriers, which slow down the adoption. Overcoming existing economic and regulatory hurdles remains the paramount to successfully translate these promising innovations from laboratory benches to the clinical practice. With this, I thank you all for your very patient listening. And I also thank the President of Pakistan Association of Pathologists, Professor Mulazim Hassan Bukhari, for providing me this opportunity to speak on this very important topic of today, the silent pandemic AMR. I also thank the chairman of this session, Major General Irfan Ali Mirza, who has spared his precious time to chair this session. Thank you very much. Thank you so much, Professor Kamran. And now over to you, Professor General Irfan Ali Mirza Saab. Dr. Irfan Ali Mirza Saab, before you talk, you still remember that once you talked about the multi-resistance, or I think resistance typhoid in Lahore. And what is the situation? I think this your talk was almost 4 or 5 years earlier, or more than this.
But yesterday we went to the Mayo Hospital, and there was a discussion on this topic, and they all were worried that there are so many cases in Pakistan appearing, which are the uh, typhoid, and they are not resistant to normal treatment. Same is the tuberculosis. So this is, I think you will give a very beautiful way, messages to the future. How can we overcome all these issues? Over to you, General Irfan Ali Mirza Sahab. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर मुलाज़िम हुसैन बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होने के बावजूद उनको माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के जो बर्निंग टॉपिक है, जिसका अभी बड़े तफसील से अहाता किया है ब्रिग कामरान साहब ने, कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप और नोवेल एंटीबायोटिक थेरेपी, तो ये आपको इसका अदराक है जो आपके एक ट्रू एकेडमिशियन होने की निशानी है। और ये हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी या पैथोलॉजी के मल्टी डिसिप्लिन्स हैं, उसको उस चीज की ये बिल्कुल नुमाइंदगी करता है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं जो कामरान साहब ने बात की है, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने उन तमाम चीज़ों का अहाता किया है कि हमारे पास जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, कि जो ये सारे सारे बैक्टीरिया हैं, उनकी रेजिस्टेंस किन वजूहात की बिना पर हो रही है। उन्होंने सबसे पहले तो बहुत सारे जो वजूहात हैं जो हम सारे जानते हैं कि एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर उसके बाद मोबाइल जेनेटिकल एलिमेंट्स हैं, ई फ्लक्स पंप्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी जो हम सबको पता है कि ये सारी वजूहात हैं। उसके बाद उन्होंने जिस चीज का अहाता किया है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अब आगे आने वाले दिनों में जो रिसर्च हो रही है, इसको कम्बैट करने के लिए उसके क्या क्या हमारे पास मोडालिटीज अवेलेबल हैं, और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने जो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है जो जीन को एडिट कर रही है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं, अमीनो मॉड्यूलेटर्स हैं, ई फ्लक्स पंप के जो इनिबिटर्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, कोरम सेंसिंग की जो इनिबिटर्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक की जो पोटेंशिएटर्स हैं, और लास्टली उन्होंने बैक्टीरियोफाज की बात की है। ये वो तमाम हैं जो फ्यूचर है इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम्बैट करने का। बट हैविंग सेड दैट, हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है। अब देखना क्या है कि हमारे पास रास्ते क्या हैं। रास्ते क्या हैं, चूंकि ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उस नहज तक पहुंच चुकी है जो शायद दुनिया में अ, शायद 2-3 ममालिक में उस नहज तक है। मिसाल के तौर पे आज से शायद 20 साल कबल मैं जब लेक्चर देता हूं तो वो मैं जो कार्बापेनम की रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, इमीपेनम मीरोपेनम की जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स, वो कोई हार्डली 4-5% तक थी। मीनिंग देयर बाय के 90-95% हमारे जो ये बैक्टीरिया हैं वो कार्बापेनम रेजिस्टेंस से बड़े आसानी के साथ ट्रीट हो रहे थे। इस वक्त हालत ये है कि एंटीबायोग्राम अभी कामरान साहब ने FIP वाला दिखाया है, 80-85-90%, कुछ में 100% तक जा रही है, कि हम इमीपेनम और मीरोपेनम को देना हमारे लिए साजगार नहीं है। इतनी अच्छी दवाई, इतनी महंगी दवाई के बावजूद हमारे बैक्टीरिया उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अभी पिछले ही दिनों पाकिस्तान में जो पाकिस्तान जो प्रायोरिटी लिस्ट है जो बैक्टीरिया की, वो रिलीज हुई है। WHO ने तो ऑलरेडी कर दी थी। तो हमारे यहाँ MRSA, VRE, ये कार्बापेनम रेजिस्टेंस के जो एंटेरोबैक्टीरियल्स हैं, सूडोमोनास वाले हैं जो कार्बापेनम से रेजिस्टेंस हैं। इसी तरह आपने खुद फरमाया कि जो हमारा जो मसला मेन टाइफॉइड का है, और टाइफॉइड में भी जो XDR टाइफॉइड है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, वो है। मैं इससे कबल के आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं, जो 4-5 साल पहले हमने लाहौर में बात की थी। सर, अभी बात यह है कि हमें रास्ते क्या हैं, हमने करना क्या है। बड़ी अच्छी बात की कामरान साहब ने आखिर में, कि अभी हमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच वाली
अप्रोच को अपनाना है। अब मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है क्या? मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच का मतलब जो होना चाहिए, और आप जैसे एकेडमिशियन और जिस तरह ये हमारे सारे पैनलिस्ट्स हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मल्टी प्रोंग्ड से मुराद ये है कि हर स्टेक होल्डर, हर जगह पे हमें इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम्बैट करना है। मिसाल, अब ये सारी जो नोवल टेक्नोलॉजीज बताई हैं कामरान साहब ने, ये हैं रिसर्च बेस्ड। हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारी उन इदारों को जहां जहां रिसर्च अच्छी होती है, उनको इन तमाम नोवल टेक्नोलॉजीज पे काम करने की जरूरत है। इन्होंने एक क्षमा दिखा दी है कि जी ये हो सकता है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, बैक्टीरियोफाज है, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटीज में जो हमारा रिसर्चेज हैं, हमारे एमफिल और पीएचडी की researches that should focus on these novel technologies so that we should come out with some plausible answer. अगले 5 साल 10 साल it will take time. ये तो है कि फ्यूचर में हमने क्या करना चाहिए। अब ये है कि कंटेक्चुअली अभी क्या करना है। अभी क्या करना है उसमें आपको अच्छी तरह पता है कि एक हमारा डॉक्टर जो है, जब स्टार्ट करता है दवाई, एक हाउस ऑफिसर है या एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, तो वो 2 से 3 से 4 मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद उसको ना स्टॉप की जाती है, ना उसको रिव्यू की जाती है, और महीना महीना वो दवाई चल रही होती है और कोई उसका वाली वारिस नहीं होता। इसका मतलब है कि हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है, अपने प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, और अपने यंगस्टर्स को, जो हमारे हाउस जॉब वाले करने वाले हैं, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो ट्रेनीज हैं, उनको रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की तरफ लाना है। इसी तरह हमें अपने करिकुलम में, अब ये रेगुलेटरी बॉडीज का काम है, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन है, कि हम अपने करिकुलम में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप के जो जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करें। इसी तरह हमारी जो लेबोरेटरीज हैं, हमने अपनी, अब चूंकि कामरान साहब ने बात की ना मल्टी प्रोंग्ड, तो मैंने कहा कि ये रिसर्चेस तो यूनिवर्सिटीज ने करवानी है, रेगुलेटरी बॉडीज ने अपने करिकुलम में ये चीजें ऐड करनी है, और आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपनी लैब, हम चूंकि सारे के सारे वी आर एकेडमिशियंस, वी आर साइंटिस्ट, तो हमने अपनी उस चीज को करना है कि कैसे हमने अल्टीमेटली जो है अपनी लेबोरेटरीज को करना है बेसिकली इक्विप। उसको लेबोरेटरीज को हमने इम्पोर्टेंट, बहुत सारी हमारी माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज हैं कि जिसमें अभी हमारे पास है ही नहीं है जो इक्विप भी नहीं है। तो वी नीड टू एक्चुअली equip our microbiology labs। आप सर ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में, आप पेशावर से लेकर कराची तक या क्वेटा तक देखें कि कितनी लेबोरेटरीज हैं जहां पे कल्चर हो रहा होता है, बैक्टीरियल कल्चर्स को। तो हमने अपनी लेबोरेटरीज को इक्विप करना है। उसके बाद हमने अपने अस्पतालों में जो एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है। कंटेक्चुअल काम करने के लिए एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप क्या है? It's a coordinated program to promote the antimicrobial, appropriate use of antimicrobials, antivirals, antifungals, ताकि हम पेशेंट के आउटकम को बेहतर कर सकें, रिड्यूस कर सकते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में। इसमें हमारे तमाम अस्पतालों की लीडरशिप का रोल है, इसमें हमारे तमाम पैथोलॉजिस्ट, आप जैसे कोना मिश्क पैथोलॉजिस्ट का रोल है, इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल है, इसमें नर्सेज का रोल है, इसमें फार्मासिस्ट का रोल है, इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल है। और मैं अपने अक्सर जब कभी किसी फोरम पे लेक्चर देना होता है तो मैं कहता हूँ नेक्सस, द नेक्सस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड क्लिनिशियंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि हम क्लिनिशियंस और माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपस में बैठे और इस चीज का तयन करें कि भाई कौन सी दवाई देनी है, किस वक्त देनी है, कब कल्चर करवाना है, कब कल्चर के बाद उस दवाई को रिव्यू करना है, जिसको एंटीबायोटिक टाइम आउट का कंसेप्ट दिया जाता है, और कब हमें उसको एस्केलेट करना है, डी एस्केलेट करना है, बंद करना है।
तो इन तमाम प्रैक्टिसेस को करने की जरूरत है। ये तो बात होगी कि जो कमरान साहब ने बात की और कंटेक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। बाकी आपने सर दूसरा सवाल किया कि जो इस वक्त हमारे यहाँ टाइफॉइड वाला सिचुएशन है, टाइफॉइड की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे आज से 5-6 साल पहले हमने वो बात की थी, उस वक्त स्टार्ट हुआ था। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट जो टाइफॉइड है 2016 में हैदराबाद से इसका आगाज हुआ और आस्ता आस्ता पूरे पाकिस्तान में फैल गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं टाइफॉइड को ट्रीट करने के लिए, जिसमें एम्पिसिलिन, कोट्रामोक्सोजोल और क्लोरोफेनिकॉल किसी जमाने में होती थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो भी अब करामद नहीं है, सेफ्ट्राइक्सोन भी करामद नहीं है। तो ये एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट है। लोग इसको मिरोपेनम और फिर एजिथ्रोमाइसिन की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि अभी हमें कल्चर कराने के कल्चर को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि हमने अपने लेबोरेटरीज को, अपनी माइक्रोबायोलॉजी के सेटअप को इक्विप करने की जरूरत है। और आप जैसे लोग इस चीज में, और जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमें इस चीज का अहाता करना चाहिए कि अगर हमने ये स्टेप्स ना लिए तो फिर हमारे पास, जैसे कामरान साहब ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की क्या सिचुएशन है, कि कोलेस्ट्रॉल तक को आप नहीं दे सकते, तो फिर क्या देंगे। जो कामरान साहब ने ये सारी नोवल चीजों के बारे में बात की है, ये तो अगले 5 साल, 6 साल, 10 साल लगेंगे इसमें। लेकिन इस वक्त कंटेक्चुअली हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो उस चीज का अहाता है। तो मेरी तरफ से ये चंद गुजारिशात थी। अगर कोई और पार्टिसिपेंट अपनी राय देना चाहे तो जरूर दीजिए। मैं कामरान साहब ने बड़े मुदल्लल तरीके से इन तमाम चीजों को अहाता किया। मेजर जी जना सर। साहब, अच्छा, एक्चुअली ओवर टू यू, ओवर टू एवरीबॉडी टू आस्क द क्वेश्चन। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये था कि सर एक रह गए आप ड्रग रेजिस्टेंस वाला, टीबी वाला सर, जना साहब। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, टीबी का भी वही सूरत हाल है जो कि हमने टाइफॉइड की बात की है, कि इस वक्त वहां पे भी हम एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट की तरफ जा रहे हैं। इत्तेफाक से मेरा टीबी, मेरा पीएचडी का टॉपिक एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी था। और ये मैं आज से एक दिहाई पहले की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त ये तकरीबन 3% तक मैंने जो स्टडी की थी, वो 3% एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट जो है हमारे पास टीबी था। अब चूंकि मुख्तलिफ जगहों पे जो स्टडीज हो रही हैं, तो ये एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट इससे बढ़ चुकी है। जो मैंने एक दहाई पहले तकरीबन जो इस पे काम किया था। तो मैंने जैसे सर अर्ज किया कि ये अब जरूरत इस अम्र की है कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी का और हमारे इन्फेक्शियस डिजीज वालों का और हमारे क्लिनिशियंस को आपस में बैठ के इस चीज का तयन करना है कि इस वक्त हमारे यहाँ स्टेटस क्या है। हमें अपनी लोकल पॉलिसीज बनानी है, एंटीबायोटिक्स के हवाले से भी, और एंटी टाइफॉइड के हवाले से भी, और एंटी ट्यूबरकुलोसिस के भी हवाले से। जो वेस्ट है, वेस्ट तो अपनी पॉलिसीज देता है। उन बेचारों ने तो फर्स्ट लाइन की भी बात की, सेकंड लाइन की भी बात की, थर्ड लाइन की भी बात की। लेकिन हमें अपने पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच जना साहब। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोफेसर सलमा कुंदी इस फोरम में मौजूद हैं। एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट पिछले 2 सालों में हमने इसके ऊपर काम भी किया। और एक चूंकि मैं आर्ट सोसाइटी यहाँ का एक मुझे ज़िम्मेदार ठहराया है आप लोगों ने, तो उसमें हमने पिछले महीने में 2 मीटिंग्स की। एक तो हमने की तमाम फिजिशियन, तमाम सर्जन्स के साथ एक पीसी में एक बहुत बड़ा वो किया, और उनमें उनको इनवाइट किया पैप के पैथोलॉजिस्ट के पे फोरम पे। और देर आर आई थिंक मोर देन 150 पीपल कि, और इसके साथ हमने कम्युनिटी मेडिसन वाले को, प्रिवेंटिव मेडिसन वाले को, आजकल जो डीन है आईपीएच की डॉक्टर सायरा अफजल, उसको भी साथ मिलाया हमने। और एक बड़े प्लानर पे गवर्नमेंट को भी बुलाया, गवर्नमेंट के मिनिस्टर हेल्थ भी एक आए हुए थे, उनको भी हमने बुलाया और उनको इन चीज़ों के बारे में बताया कि देखें अब बहुत सारी चीज़ों पे आप वो करने जा रहे हैं, लेकिन एक जैसे डॉक्टर कामरान आपने कहा कि एक एक पैंडेमिक, मैंने कहा एपिडेमिक नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये पैंडेमिक आने वाला है कि किसी किसी जगह पे भी 100% आ रहा है।
फिर 4 दिन पहले एक और फोरम हुआ जो सर्वेलेंस के ऊपर हमने काम किया, डॉक्टर सलमा कुंदी भी उसमें मौजूद थी, और उसके ऊपर हम अपने लेवल के ऊपर इस चीज़ के, डॉक्टर कामरान भी उसमें इनवाइटेड थे, लेकिन कामरान साहब उसमें नहीं आ सके। तो देखें बिल्कुल इस वक्त भी हमारे पास 35-36 लोग इस वक्त मौजूद हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी मौजूद हैं। हमारी ये आवाज़ जो है, अगर हम इसको किसी ना किसी तरीके से बोल के भी, लिख के भी, किसी ऐसे अंदाज में हम अपने आप को जो मैसेजेस करते हैं, तो अपना फ़र्ज़ हम अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और आपके तावन से, आप जैसे खूबसूरत लोग, पढ़े लिखे लोगों के तावन से, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तावन से, प्रॉब्लम ये है कि हमारे, जब व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन केई, एक कल्चर आता था, तो उसकी जिस वार्ड का कल्चर आता था, उस वार्ड के कल्चर से जो रिपोर्ट होती थी, वो हम एंड पे बैठ के हफ्ते पे वो फिजिशियन या सर्जन या सारे वो डिस्कस करते थे कि ये क्या आया है और क्यों आया है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पता नहीं हमारे बहरहाल यहाँ। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस चीज को लीड लेते हैं, आप इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं, और यही है, दिए से दिया चलता है। और एक दूसरे को हमने इसी तरह आगाही देनी है। और आप जैसे लोगों की मावनत, आप जैसे लोगों की मशावरत, और आप जैसे लोगों की लीडरशिप से इंशाअल्लाह ताला, मुझे चलो, अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि अगर इस तरह की काविशें हम जारी रखेंगे तो कम से कम बेहतरी जरूर आएगी, अगर टोटली हम उसको ना कर सके तो। भाई जनरल साहब आपने एक बात खूबसूरत की कि हमें एक, गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ चीज़ों को एक लॉ की शक्ल में ले आया जाए। और जी उसके बिल्कुल भी सर। ऊपर, जी जी, उसके ऊपर भी हमने ये किया कि जैसे कामरान साहब की प्रेजेंटेशन में था कि अगर एंटीबायोटिक लिखना भी है तो लो मीडियम इस तरह के लिखा जाए, हाई उसका नहीं किया जाए। तो ये हम जी इस बिल्कुल सर। फोरम पर लिखेंगे भी सही आ, इंशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल सर। सर, ये देखें सर, एक जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है जो एंटीबायोटिक्स के हवाले से है, वो 2016 से ऑलरेडी, यानी उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है। मसला सिर्फ ये है कि हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। नहीं कर पा अब रहे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसमें लॉ की जरूरत है। इसमें सर, जब 2013-14 में जब ये ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उन्होंने उस वक्त इस चीज का अदराक किया, और उन्होंने वो खुद, यानी प्रेसिडेंट हिमसेल्फ प्रिजाइडेड द मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी ये आप देखें कि उन मुल्कों की ये है। हमें भी ये चाहिए कि हमारे भी माशाल्लाह जितने भी द पर्सन हु मैटर शुड एक्चुअली प्रिजाइड। और माशाल्लाह अब जिस नहज पे इस वक्त हमारे गवर्नमेंट भी और हमारे तमाम इदारे चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सेहत की भी इंशाल्लाह जो पॉलिसी मेकिंग है और पॉलिसी डिसीजन है, वो राइट बेहतरीन है। ट्रैक की तरफ इंशाल्लाह जाएगी सर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। जी, सवाल और जवाब की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर रफीक कानानी साहब कराची से हैं, बड़े मशहूर और मारूफ पैथोलॉजिस्ट हैं। जी सर, ओवर टू यू, यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन। जी कानानी साहब, प्रोफेसर कानानी साहब। जी अ, मेरा ख्याल है सर, अस्सलाम हमने वालेकुम। बड़ी तफसील। अस्सलाम वालेकुम। जी कानानी साहब, जी वालेकुम सलाम। जी, थैंक यू मुलाजिम साहब। और सबसे पहले तो ये कि जो आपने आज का प्रोग्राम अरेंज किया है, और ब्रिगेडियर साहब ने जितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना न्यू वर्जन और फ्यूचर और प्रेजेंट को डिस्क्राइब किया है, तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। अच्छा, इसमें जो मल्टी प्रोंग अप्रोच की बात हुई, तो मेरा ये सजेशन है कि इसमें देखें, एक ज़माना ये था कि हम रेगुलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं थे। अब ओवर लास्ट 10 years इतने क्वालिफाइड फार्माकोलॉजिस्ट हमारे पास, फार्मासिस्ट अवेलेबल हो गए हैं कि हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं और करवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि तमाम जो मल्टी प्रोंग अप्रोचेस हैं उसमें इस अप्रोच को जरूर ऐड करने की जरूरत है जी बिल्कुल। कि ऑथोराइज्ड फार्मासिस्ट जो है ना, वही दे शुड बी अलाउड टू डिस्पेंस दी एंटीबायोटिक्स। इसी तरह से जो फार्मेसीज हैं, दे शुड मेडिकल सबमिट, स्टोर्स हैं, हाँ मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं। फार्मेसीज दे शुड सबमिट द रिपोर्ट ऑफ व्हाट एंटीबायोटिक्स दे हैव डिस्पेंस्ड एंड टू व्हाट एक्सटेंट, और उसकी क्या इंडिकेशंस थी। इसी तरह से जी कनानी प्रेस्क्रिप्शंस साहब, आप लिखनी है। आपने
खरानी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और जो एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रोग्राम की जो अगर आप रूह को देखें, तो उसमें फार्मासिस्ट इज वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप टीम। और उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अब कुछ हमारे इदारे हैं, मैं नाम बल्कि लूं, जैसे आगा खान है, उन्होंने अपने फार्मासिस्ट को बड़ा एम्पावर किया हुआ है। इसी तरह कुछ और इदारे हैं, उन्होंने अपने फार्मासिस्ट को बड़ा एम्पावर किया हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फार्मासिस्ट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए आपने जो बात की है सर, बड़ी पर्टिनेंट बात की है, बड़ी सही बात की है। तो मुलाजिम साहब, मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरे कुछ जरूर गेस्ट जरूर जरूर। बैठे हुए हैं। तो लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, कमरान साहब का बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। और खानानी साहब ने जो आखिर में बात की है, वो बड़ी पर्टिनेंट बात की है। तो मेरी तरफ से सर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। आपका। जी जी। एनीबॉडी आस्क डॉक्टर मैं कंटिन्यू अपना। करना चाहूंगा। मुलाजिम साहब, जी सर, जी बोले बोले। फार्मेसीज का रेगुलेशन जो है ना, वो ऑलरेडी है। सिर्फ उसमें हमने जो कंपोनेंट ऐड करवाना है वो है एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स की यूजेज का। और तीसरा ये है कि डॉक्टर्स जो है ना, एक जमाने में डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग भी मुश्किल थी, लेकिन अब पीएमडीसी ने काफी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर लिया है कि डॉक्टर्स की भी जो एंटी माइक्रोबायल प्रिस्क्रिप्शंस हैं। एक तो ये है कि जैसे कि मेजर जनरल साहब ने कहा था कि कब दवा शुरू की कब खत्म की उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो लिखे हैं, दैट शुड बी टाइम बाउंड, डोजेज बाउंड, और उसमें उनके स्टैंप लगे हुए हों और उनका पीएमडीसी का नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। उसी के ऊपर जो है ना वो एंटी माइक्रोबायल्स डिस्पेंस होनी चाहिए। तो बस यही मेरी चंद गुजारिशात हैं। जी जी जी। अच्छा सर, ये इसमें अपना। मैं कुछ थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे जनरल साहब ने अभी बताया था हमें कि इसमें ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, जो हमारी हाईएस्ट बॉडी से अप्रूव्ड है, पार्लियामेंट से। नेशनल एक्शन प्लान में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, फार्मासिस्ट का रोल, क्लिनिशियंस का रोल, ये सब मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है सर कि जैसे हम हॉस्पिटल्स में एंटीबायोग्राम्स बनाकर हॉस्पिटल को बताते हैं, उन्हें पूरे सर्वेलेंस का डाटा प्रेजेंट करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये परसेंटेज रेजिस्टेंस है इस वक्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन और हम एंटीबायोटिक पॉलिसी उसकी बेस के ऊपर बनाते हैं। जो हम एक एंटीबायोग्राम बनाते हैं उसकी बेस के ऊपर हॉस्पिटल की एंटीबायोटिक पॉलिसी बनती है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर रूल, एनी अदर लॉ इन पाकिस्तान, जिसको फॉलो करना, किसी भी लॉ को, किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जाता पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। कोई इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग नहीं है एक्चुअली, जो स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग हों, जो कि तमाम लॉज को, रूल्स को फॉलो कराए जाए। अब नेशनल एक्शन प्लान एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें सब चीज़ों को टच किया उन्होंने, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। डॉक्टर कामरान, आपने एक सवाल, एक बहुत अच्छा एक वो किया था। ये एफएमटी एक प्रोबायोटिक वाली बात तो समझ में आती है, एफएमटी वाली, और ये क्या है जो डोनर के उसके फीकल से वो वाला, वो समझ नहीं आई ज़रा। सर, कुछ पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में जो कि फॉर एग्जांपल उनको ऐसी एंटीबायोटिक्स मिल रही होती हैं जिससे उनका गट का बेनिफिशियल माइक्रोबायोटा, जो पूरा माइक्रोबायोम है गट का, वो चेंज हो जाता है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट है कि वो तमाम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो वो गट के भी तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, जो कि जिसमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल हो जाते हैं। तो एफएमटी में इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक नॉर्मल पर्सन से गट का उसका फ्लोरा लेकर, तो वो ट्रांसप्लांट किया ऐसे पेशेंट में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जो जिसको हैवी एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, जिसमें उसका गट का फ्लोरा वॉश आउट हो गया हुआ है। तो उसमें वो ट्रांसप्लांट करने से उनको कुछ बेनिफिट्स नज़र आए कि जो गट गट का फ्लोरा, जो बेनिफिशियल फ्लोरा है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कि वो बेसिकली पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो ये
इसके ऊपर ट्रायल्स भी हुए हैं और ये अच्छे पोजीशन में है इसके ट्रायल्स। जी डॉक्टर सलमा गोंदी। जी राबिया, डॉक्टर राबिया जी बेटा आपने सवाल। जी डॉक्टर राबिया। Assalamu alaikum, sir. I'm वाह, Dr. Abdul, a very fairly young microbiologist from ओह, Faisalabad. थैंक यू आई नो। Compared to the यस। yes, very experienced people over here. So my question is कि अभी डॉक्टर कामरान ने सर आपसे ये बल्कि कि आप you were talking about novel therapies and then also there was a suggestion कि अब हमारे जो future MPhil PhDs होने चाहिए उनकी they should research on these areas. So in the face of limited research funding, हम लोग यंग रिसर्चर्स को कैसे इनकरेज किया जा सकता है, particularly people like me who come from cities जहाँ पे ऑलरेडी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं। मेरा ये क्वेश्चन सर डॉक्टर मुलाजिम से भी होगा कि सर क्या पैप भी इसमें कोई रोल प्ले करेगी कि हम लोग इस तरह के डेटा कलेक्ट करने में या इस तरह की रिसर्च में स्मॉलर सिटीज से कंपैरेटिवली या ये जहाँ पे से काम कम हो रहा है उनको इनकरेज कैसे किया जाए। दूसरा सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बात हुई, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे पैप माशाल्लाह इतना काम कर रही है पाकिस्तान में, yearly a lot of microbiologists, pathologists come together. So why don't we also make a bench that will present work on AMR to the government और इसकी जो नीड ऑफ द आवर है कि AMR को कॉम्बैक्ट किया जाए, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है फैसलाबाद से कोई ऐसा डेटा नहीं जाता, बिकॉज आई हैव सम एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर कामरान। बिल्कुल इन्होंने खूबसूरत बात की। पैप इंशाल्लाह इसमें इनिशिएटिव लिए भी है, मैंने अपने दौर में किया भी है, और डाटा को हमने गवर्नमेंट लेवल पे इसको प्रेजेंट भी किया है, बल्कि सर्वेलेंस के ऊपर भी जोर दिया है। जहाँ तक रही रिसर्च प्लानिंग की, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसा है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे किसी जगह पे पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसके अंदर इंशाल्लाह पैप ज़रूर रोल अदा करेगी। कि अब पैप के पास कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके साथ हम एमओयूज़ करते हैं, और वो अपने डाटा को, कुछ हमारी कंपनियां हैं जिससे हमारे एमओयूज़ हैं, जिससे हम अपना एम अपने स्टूडेंट्स का जो उनके अंदर फंडिंग लेंगे इन फ्यूचर। लेकिन डिपेंड करेगा वो प्रोजेक्ट आपका अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद आपको पीएचडी का लेवल पे जब है, तो वो पैप उनको साथ कनेक्ट करेगी। वी हैव ऑलरेडी प्लान दिस वन। क्योंकि इस पैप के अंदर हमें कुछ कंपनियां हैं, चार पांच बड़ी कंपनियों के साथ हमने उनसे एमओयू किया था कि हमारे स्टूडेंट्स को अगर एक्सपोजर देना है या हमारे स्टूडेंट्स को किसी जगह पे रिसर्च करानी है, तो उसमें आपकी कोलेब्रेशन ज़रूरी होगी। बाकी दूसरे सवाल का जवाब डॉक्टर कामरान साहब आप दे दें। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब आप काइंडली अपना सेकंड पार्ट रिपीट करें। जी एक ग्रुप ऑफ वो हो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, जो हम अपना एक वो करके गवर्नमेंट के अपना डाटा कलेक्ट करें। बिल्कुल हम तो आजकल असल में कैंसर रजिस्ट्री नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। हम अब माइक्रोबायोलॉजी रजिस्ट्री करना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे इदारों का है। ये बहुत अच्छा सवाल है। फ्यूचर जी में इसको भी हम इसको जी जी डॉक्टर मैं कामरान सर आप बताएं। बताता हूँ। सर इसमें एनआईएच ने लीड ली है। एनआईएच ने ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत सारी लैब्स को सेंटिनल लैब्स डिक्लेयर किया है जहाँ से वो डाटा कलेक्ट करते हैं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत जगहों पे जैसे जनरल साहब ने बताया था हमें कि कल्चर ही नहीं हो रहे होते। लेकिन जहाँ जहाँ पर अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की, वहाँ से डाटा कलेक्ट होकर ट्रांसमिट होता है। वहाँ पर फोकल पर्सन्स भी डिक्लेयर हुए हुए हैं। तो डॉक्टर राबिया आपकी लैब में अगर कल्चर्स होते हैं तो आप डेफिनेटली एनआईएच के साथ पार्टिसिपेट करें इसमें, क्योंकि एनआईएच ही एक नेशनल इदारा है जो कि नेशनल लेवल पे डाटा कलेक्ट कर रहा है। और वो फिर जो पाकिस्तान एंटी माइक्रोबियल सर्वेलेंस सिस्टम है पास, उसमें एनआईएच ही पार्टिसिपेट कर रहा है। और वही डाटा फिर आगे ग्लास में यानी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल में वो डाटा प्रेजेंट किया जाता है। तो आपका जो कल्चर का डाटा है उसको आप ज़रूर शेयर करें एनआईएच के साथ। थैंक यू और सर, थैंक यू फॉर द पंजाब में इंफॉर्मेशन। भी डॉक्टर राबिया, पंजाब में भी अब आईपीएच को सर्वेलेंस के ऊपर इसको गवर्नमेंट ने उसको वो किया है। और इस आईपीएच की लैब्स को भी इसको एक वो बना रहे हैं, जिस तरह फेडरल लेवल पे भी किया जा रहा है।
और ये भी है कि आईपीएच और एनआईएच को कोलैबोरेट करके एक जनरल डाटा नेशन का इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी प्रोफेसर सलमा कुंदी, ओवर टू यू बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, बहुत सारा टाइम हो गया। जी जी प्रोफेसर सलमा कुंदी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुलाजिम साहब। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आप इतने शानदार लोग एकेडमिशियंस को इस फोरम पे हमसे मिला लेते हैं। आज बहुत खुशी हुई ब्रिगेडियर कमरान अफजल साहब को सुन के, और फिर मेजर जनरल इरफान अली मिर्जा साहब को सुन के, एंड ऑब्वियसली हमारे पुराने साथी रफीक खानानी साहब यहाँ हैं, सरवर पीर खानी साहब हैं, यासिर इसहाक है हमारे कोलीग जो के बड़े हमेशा हमारे साथ इन सब वेबिनार्स में शामिल होते हैं। राशिद साहब आरिफ तो साहब होते हैं, ही जी हैं, जी बिल्कुल जी। आरिफ साहब भी हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ब्रिगेडियर कमरान अफजल साहब का। ही इज द HOD पैथोलॉजी इन फौजी फाउंडेशन रावलपिंडी एट द मोमेंट एंड एक्स कमांडेंट AFIP। देखिए हमारे पास इतने लर्नेड लोग हैं, दे आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एंड देयर से मैटर्स। फिर मेजर जनरल साहब इरफान साहब हैं, आप खुद हैं मुलाजिम साहब, हुआ प्रेसिडेंट पैप्स। अब बात यह है कि हो गया है, नेशनल एक्शन प्लान बन गया है, NIH काम कर रहा है, लेकिन हम जैसे एबटाबाद में पीछे बैठे हुए हैं, हमें इन सब चीजों का पता नहीं लगता। मे बी हमारे पैथोलॉजिस्ट को पता हो। एंटीबायोग्राम तो हम अपने हॉस्पिटल में भी बनाते हैं, लेकिन आगे NIH को भेजना मुझे पता नहीं था। ये जरूरी हो गया है। और मेरी ये इस्तदा है कि यू ऑल आर हियर, प्लीज आप सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट गेट टुगेदर and take physicians on board, especially the GPs of your area, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये GP से कलम से ज्यादा ज्यादा निकलती है। वहीं पे, ज्यादा रेजिस्टेंस वहीं पे होते हैं, जीपी से होते और हैं। GP का प्रेसिडेंट इज राशिद साहब, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, यहाँ तिलावत भी करते हैं। प्लीज आप सब ये ग्रेट माइंड्स इकट्ठे बैठ जाएं, जूम पे मिल लिया करें वंस अ वीक, और एक लाए अमल तय करें कि GPs को हमने क्या भेजना है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स ठीक हैं, कौन वो सी लिख नहीं है। सकते हैं वो आप। लिख के आप इनको भेजते हैं। सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा। जिस तरह हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, वो इतने एकेडमिक उसमें नहीं घुसेंगे, बस उनको लिखा हुआ दे दें कि ये चीजें अब ऑब्सलीट हैं, इसकी जगह आप ये इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए मेरे जैसा मरीज हुज अ डॉक्टर, मैं जब तक एंटीबायोटिक नहीं खाती, आई कैन नॉट वेट फॉर अ कल्चर। उस वक्त तक तो मैं खुदा ना खास्ता बहुत बुरे हालत में चली जाऊंगी। मुझे फौरन एंटीबायोटिक शुरू करना पड़ता है। मतलब ये मैं आपको सच कह रही हूँ, हम सब की रेजिस्टेंस इतनी खराब है इस कौम में, इस मुल्क में। उसको भी ठीक करना है, उसके ऊपर प्लीज आप लोग गौर फिक्र करें। वी विल लीव द एंटीबायोटिक्स, लेकिन हमें कोई अल्टरनेट पाथवे बनाएं। अगर आप कहते हैं आप हल्दी खाएं, आप जिंजर खाएं, आप गार्लिक खाएं, विल डू दैट, बट प्लीज एक अल्टरनेट रूट हमें जरूर बता दें, खासकर हाउस ऑफिसर्स को और GPs को। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर कमरान अफजल साहब। थैंक इट यू वॉज वेरी सच मच। एन एनलाइटनिंग लेक्चर टुडे। ये हमने थैंक यू। रिकॉर्ड कर दिया है, और ये अपलोड होगा वुमेन मेडिकल कॉलेज की यूट्यूब और में। पब्लिश वो होगा, हम और बार बार पब्लिश होगा। सुनेंगे, पब्लिश भी होगा, और हम इसको सुनाएंगे अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने स्टाफ को भी जो यहाँ आज नहीं थे। दूसरी इस्तदा ये है, जिन जिन ने ये अटेंड किया है, इफ दे वांट ए ई सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, प्लीज अपना ईमेल जरूर लिख लिया कीजिए। अभी भी चैट में आप लिख दें, so that we send it to you on email, the e-certificate. Thank you, Ji Kamran Saab. थैंक यू सो Thank you to मच all सर। the participants. Thank you, Mulazim Saab. Pakistan Zindabad. सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। थैंक यू प्रोफेसर कामरान, थैंक यू थैंक यू वेरी एवरीबॉडी, मच। Thank you, थैंक यू dear. शेरखानी, थैंक यू मैडम सलमा कुंदित। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। Allah Hafiz, Ji.